Hello students, this video is for grade 1st, so let's start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are English, Maths and EVS. So let us start with our first subject, English. The question says, fill in the blank by using words from the bracket. Okay, brackets में से words को use करके blanks को fill करना है. Dash is your name. Dash is your name. Bracket में है what, where. What मतलब होगा क्या, where मतलब होगा कहाँ. So which one is suitable? तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम कहाँ है? What? Very good. What is your name? Next, dash is she. वो है. What मतलब क्या, who मतलब कौन. वो क्या है. What यूज करेंगे तो हो जाएगा सेंटेंस वो क्या है, और who यूज करेंगे तो जाएगा वो कौन है. So which one is suitable? What or who? Who. W-H-O. Who. Who is she. वो कौन है. Next, dash desk is yours. desk तुम्हारी है. Which मतलब कौन सी. Who मतलब कौन. कौन डेस्क तुम्हारी है या कौन सी डेस्क तुम्हारी है. Which one is suitable? Which desk is yours. Okay, so we have to use some WH words to fill up these blanks, and blanks को use fill up करने के लिए brackets में से WH word को select करना है. और WH words क्या है? What, where, who, which, when. Okay, these are WH words. Dash are you going. तुम जा रहे हो. Where, तुम कहाँ जा रहे हो. Who, तुम कौन जा रहे हो. Which is suitable, where or who. Where. Very good. Where are you going. तुम कहाँ जा रहे हो. Okay, so in this manner only you have to fill these blanks with the help of these words. Okay, in words की help से ही आपको इन blanks को fill up करना है. Understood? Yeah. So now let's move to the next section of the sheet, maths. Match the following. Okay, in this we are having dosing tables. Okay, dosing tables हैं जिसके answers दूसरे side पे हैं and we have to match them. Answers को match करना है. इसके लिए क्या होना चाहिए? Table learn होना चाहिए. कहाँ तक? At least 2 to 10. कम से कम 2 से लेकर 10 तक table learn होनी चाहिए. 6 3s are 18. We will match with 18. 8 4s are 32. So we will match it with 32. 9 6 are 54. So we will match it with 54. 6 8s are 48. So match it with 48. 7 2s are 14. So we will match with 14. Okay. So इस तरीके से क्या करना है? टेबल रीड करनी है और आंसर्स को मैच करना है. What we will do? Read the table and match the answers. Okay, let's revise table from 2 to 5. 2 से 5 आज revise करेंगे. Then we will revise further 6 to 10 tomorrow. 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are
6. 2 4s are 8. 2 5s are 10. 2 6s are 12. 2 7s are 14. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 2 10s are 20. Now the table of 3. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 10s are 30. Now the table of 4. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 4 4s are 16. 4 5s are 20. 4 6s are 24. 4 7s are 28. 4 8s are 32. 4 9s are 36. 4 10s are 40. Now the table of 5. 5 1s are 5. 5 2s are 10. 5 3s are 15. 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 6 are 30. 5 7s are 35. 5 8s are 40. 5 9s are 45. 5 10s are 50. Okay, so we have read table 2 to 5. Now, to the next question. Complete the table of 10. 10 की table complete करनी है and I hope you can do this. 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30 and so on. Now, let us move to our last section of the sheet, EVS. Answer the following using help box. Okay, help box में 6 helpers के name दिए हैं. Peon, sweeper, teacher, principal, watchman and gardener. आपको इनकी हेल्प से सारे ब्लैंक्स को फिलअप करना है, आंसर करना है इन क्वेश्चंस को. आई क्लीन द क्लासरूम्स. हु एम आई? मैं क्लासरूम को क्लीन करता हूँ. मैं कौन हूँ? आई एम स्वीपर. SWEEPER स्वीपर. आई रिंग द बेल. हु एम आई? मैं बेल रिंग करता हूँ. मीन्स जब एक क्लास का पीरियड खत्म हो जाता है, एक सब्जेक्ट का पीरियड खत्म हो जाता है, तो बेल कौन रिंग करता है? पियोन. पियोन रिंग्स द बेल. PEON पियोन. I take care of the plants. Who am I? मैं प्लांट्स की देखभाल करता हूँ. बोलो मैं कौन हूँ? प्लांट्स की टेक केयर कौन करता है? गार्डनर. GARDENER
D-E-N-E-R, gardener. Okay, in this way you have to read the hints and answer the question. I hope you can do this. So if you have any kind of doubt, you can ask me. Thank you.